नमस्कार, मैं हूं दिबांजनी मोइत्रा। एक तरफ पुलवामा हमले का बदला लेकर सरकार और देश गदगद है, तो दूसरी तरफ सेना के बहादुरी भरे काम को शक की नजरों से कुछ लोग देख रहे हैं और सरकार और सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह ने इस सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कहीं खाली जगह पर बम गिराकर कह रहे हैं कि आतंकवादियों के ऊपर बम गिराए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े झूठे हैं। अब ये देखो, सर्जिकल स्ट्राइक ये आज से हो रही है। अब आज टीवी में चल रहा है, ये तो 10 दिन पहले से पता था, 5 दिन पहले से कि ये पाकिस्तान से बात करके कोई खाली वाली मकान करा देंगे और जाए 2 बम दाग दें, कहीं सबका मारिया वो बयान दे दें कि जो है ठीक है। तो ये झूठे लोग हैं, ये भ्रम फैलाकर आतंकवाद को बढ़ावा इन्होंने दिया। वहीं जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो पत्रकार पंडित सिंह से सवाल पूछने लगे। चारों तरफ से घिर चुके पंडित सिंह जवाब से कन्नी काटने लगे और कहा कि ये मेरा वीडियो नहीं है, ये वीडियो फर्जी है और ये हमारे विरोधियों की साजिश है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पंडित सिंह ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, सेना ने अच्छा काम किया है, उस पर लोग राजनीति करके राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। हम क्यों सेना की बुराई करेंगे, ये वीडियो फर्जी है, हमने सेना की बुराई नहीं की है। पंडित सिंह के इस बयान पर गोंडा विधायक और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण ने कहा कि मेरे पास सबूत है कि ये वीडियो पंडित सिंह का ही है। वीडियो में सपा नेता ने राष्ट्र विरोधी बात बोली है। इनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो इनकी बातों से सहमत ही नहीं थे। हम चाहते हैं कि इस मामले को समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संज्ञान में लें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत कई दिनों से हमला करने की कोशिश कर रहा था और मौका मिलने पर भारत ने 26 तारीख को भारतीय एयरफोर्स ने रात को 3:30 बजे बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में बमबारी की, जिसमें 300 से 400 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं भारत का विरोध करते हुए पाकिस्तान ने इसे झूठा करार दिया और कहा कि भारत का हमला बेबुनियाद है। वहीं एक दिन बाद पाक एयरफोर्स के विमान भारतीय सीमा में घुसे, जिसका जवाब भारतीय एयरफोर्स ने बड़ी ही बहादुरी के साथ दिया। लेकिन पाक एयरफोर्स के विमान का पीछा करते हुए भारतीय एयरफोर्स के विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन पाक अधिकृत कश्मीर में फंस गए, जिन्हें बाद में पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। भारत ने इसका विरोध करते हुए और कूटनीतिक चाल को चलते हुए पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और पूरे पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया और भारत की धमक पहली बार विश्व समुदाय में देखने को मिली, जहां पर विश्व समुदाय ने भारत को कहा कि भारत को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और हमला करने का भी अधिकार है। एक साथ कदम मिलाते हुए एक साथ आए। वहीं घटिया राजनीति के चलते कुछ लोग अपने घटिया बयानों से सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं और इसी का परिणाम है कि पंडित सिंह का बयान जो देश को किनारे कर लोकप्रिय होना चाहते हैं। Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Sir, for a picture, can we have all together? For a picture. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen.
On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft, which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that 1 F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you. Thank you, sir. May I now request Major General Bahal to kindly give the Army statement. Jai Hind and good evening to everyone. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bhimber Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting
and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. Despite the turn of events, as you all are aware, the Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. Jai Hind. Thank you, sir. Admiral Gujral, please.